Good morning students, myself Chaudhary Kamla in your 7th standard in our math subject. We already started our chapter number 2 fractions and decimals. In that our exercise 2.2 we already finished. So today we have to start our exercise 2.3. In that question number 1. Our question number 1 is find 1 upon 4 of now in that we have given in A 1 upon 4 of 1 upon 4. Then after we have to find out B means 1 upon 4 of 3 upon 5. And then after we have to find out C means 1 upon 4 upon 4 upon 3. Now A number 1 upon 4 of 1 upon 4. Now you know that of means we have to put down multiplication sign. In our exercise 2.2 you already learned about this. Of means we have to put down multiplication sign. So 1 upon 4 multiplication means multiply by 1 upon 4. Now in multiplication of fraction, in that you know that in multiplication में हमें क्या करना है? तो multiplication numerator with numerator and denominator with denominator. So 1 is 1 and 4 fours are 60. So answer is 1 upon 60. Same here B number 1 upon 4 of 3 upon 5. So 1 upon 4 of 3 upon 5, it means 1 upon 4 of we have to remove. So multiplication sign we have to put down. So 1 upon 4 multiplied by 3 upon 5. Same here 1 3s are 3 and 4 5s are 20. This one step if you want to write down, then you can write. Otherwise directly that our A means same as our A number, you have to write down only answer. Now C number 1 upon 4 of 4 upon 3. Now of means we have to remove here. So multiplication sign we have to put down. So 1 upon 4 multiplied by 4 upon 3. Now here 1 upon 4 multiplied by 4 upon 3. Now here we know that in numerator and denominator, if any number is same, so we have to cancel it. So 4 and 4 in numerator and denominator, only numerator में और denominator में ही कट करना है. ऊपर कोई सेम नंबर है तो उसको आपको कट कैंसिल नहीं करना है. ओनली ऊपर एंड नीचे कोई सेम नंबर है तो उसको आप कट कर सकते हैं. सो हियर 4 इन न्यूमरेटर एंड दिस वन 4 इज इन denominator, but in multiplication you can cut. Otherwise in addition or subtraction you have to find out LCM. So 4 and 4 is cut. So the answer is in numerator what is remaining? Only 1 is remaining. So 1 in numerator. Now in denominator only 3 is remaining. So our answer is 1 upon 3. After that our question number 2. In your exercise 2.3 question number 2. But before that its second number is remaining. So first number in that A, B, C we already finished. So now second number in that also you have to given A, B, C. So that second number you have to solve in your homework, means in your practice. Now question number 2. Question number 2 is multiply and reduce to lowest form. And in bracket you have to given if possible. अगर टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल. सो हियर वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट हियर यू हैव टू गिवन 2 upon 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 upon 3. इट मींस 2 upon 3 मल्टीप्लाई बाय मिक्स फ्रैक्शन में से हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ये तो 2 upon 3 ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है. So that number we have to write down as it is. But now this multiplication sign and now this one is mixed fraction. So we have to convert it. So 2 multiplied by 3. So 2 3s are 6 plus 2. So 8 and in denominator जो number है वो same number we have to write down. और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है तो 3 2s are 6 और ये जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको आपको उसमें ऐड करना है. तो 3 2s are 6 plus 2 8 upon 3. Now here 2 8s are 16 and 3 3s are 9. Now here we have to find out its mixed fraction. Answer also in that answer we have to convert it in mixed fraction. So 9 डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज लिख दो. अभी 9 का टेबल बोलो. 9 1 is 9, 9 2 is 18. So 18 is greater than 16. So 9 1 is 9 प्लस कितने करोगे तो आपको 16 मिलेगा. तो प्लस 7 then we got here 16. Now
Second number 2 upon 7 multiply by 7 upon 9. Same here 2 multiply by 7 in denominator 7 multiply by 9. Now ऊपर नीचे जो भी same है उसको cut करो. This 7 is same, so we have to cut it, cancel it. So in numerator 2 is remaining and in denominator 9 is remaining. Here denominator is greater than numerator, so we have to write down our answer same as it. Means we have to keep as it is. We don't have to convert it in mixed fraction because this one is proper fraction. अगर improper fraction है so we can convert it in mixed fraction. Then after remaining 3, 4, 5 and 6 number and 7 number you have to write in your practice in your homework. Now question number 3. Your question number 3 is multiply the following fractions. Your question number 3 is multiply the following fractions. So, in that first number, sorry, by mistake here I written that A. This one is your first number and this one is your second number. Now, in that first number, 2 upon 5 multiply by 5 and 1 upon 4. So, 2 upon 5 as it is, but this one is in mixed fraction, so same as our previous examples. Question number 2 we have to write down 5 4 is 20 plus 1, so 21, and in denominator जो denominator same as it is we have to write down at here. Now ऊपर का multiplication 2 multiply by 21 in denominator का multiplication 5 multiply by 4. अभी ऊपर नीचे कुछ कट हो सकता है possible, then we have to cut it. So 4 means we know that it is a 4, so this 2 and this 2 is cut. So in numerator only 21 is remaining and in denominator 5 is a 10 is remaining. So now here we know that this 10 is less than this numerator. Numerator से 10 क्या है? Less है, means छोटा number है. So 10 का अभी हमें टेबल बोलना है, means improper fraction है तो we have to convert it in mixed fraction. So 10 का टेबल बोलो, 10 1 is 10, 10 to the 20 plus 1 तो 21 and in denominator we have to write down 10. After that it's second number. In second number you have to give 6 and 2 upon 5 multiply by 7 upon 9. Here this one number is mixed fraction. So multiplication करते टाइम हमें क्या करना है, कोई भी mixed fraction number नहीं होना चाहिए, या तो proper होना चाहिए या तो improper. Otherwise whole number, integer number होना चाहिए. अगर कोई नंबर आपको mixed fraction दिया है तो पहले आपको उसको convert करना है. तो 6 5 is 30 plus 2, 32 in denominator, 5 multiply by 7 upon 9 as it is. Now 32 ऊपर का multiplication in denominator 5 9 is 45. But अगर कुछ कट हो सकता है तो cut it. Otherwise directly we have to do multiplication. Here no one number we can cancel in numerator and denominator. So directly 32 multiply by 7. Then our answer is 224. Then 5 multiply by 9. Then 45. अभी आपको जैसे मैंने सिखाया था डिवीजन करके 45 को 224 को 45 से डिवाइड करो. देन आफ्टर जो आंसर मिलता है दैट नंबर यू हैव टू पुट डाउन एट हियर एंड जो रिमाइंडर बचता है दैट थिंग यू हैव टू राइट डाउन इन न्यूमेरेटर. अदरवाइज 45 का टेबल लिख के भी आप कर सकते हो डायरेक्टली. देन आफ्टर रिमाइंडिंग ऑफ दिस वन क्वेश्चन नंबर 3 दैट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ दैट यू हैव टू डू इन योर प्रैक्टिस. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 विच इज ग्रेटर. Question number 4 is which is greater. In that you have to given first number 2 upon 7 of 3 upon 4 or means A देखना है और A देखना है. दोनों में से greater कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है. So 2 upon 7 of 3 upon 4 बड़ा है या तो 3 upon 5 of 5 upon 8 बड़ा है. तो दोनों का पहले हमें क्या करना पड़ेगा, simplification. So first we have to find out simplification. 2 upon 7 of 3 upon 4 means of we have to remove and we have to put down only multiplication sign. So 2 upon 7 multiply by 3 upon 4. Now ऊपर का multiplication 2 3 is 6 and this one is 7 multiplied by 4. But before that we have to cancel if possible then. So now we know that 2 is a 4, this 2 cut, here 3 only numerator in that remaining, and now in denominator this 7 and this 2 means 7 2 is a 14 is remaining. Now first number its simplification we already finished, but now second number. Second number is 3 upon 5 or 5 upon 8. So 3 upon 5 multiplied by 5 upon 8. कुछ कट होगा, yes, this 5 5 कट, so here 3 and denominator में 8 is remaining.
3/14 जो फर्स्ट हमारा नंबर था उसका हमें सिंप्लीफिकेशन मिला, 3/8 हमें सेकेंड नंबर का सिंप्लीफिकेशन करके रिजल्ट मिला। अभी हमें देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। सो जो नंबर का डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो नंबर को हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर। बट ये हमें कब देखना है, जब दोनों नंबर के न्यूमरेटर सेम दिए, जब दोनों नंबर के न्यूमरेटर हमें सेम दिए हो तभी हमें क्या देखना है, ओनली डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर छोटा, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो दिस वन नंबर इज ग्रेटर देन दिस वन नंबर। सो ये नंबर का कौन से नंबर का सिंप्लीफिकेशन था, तो ये 3/5 of 5/8 is greater than that previous number. Then after question number 5. Question number 5. It's your word problem. Sally plants 4 saplings in a row. 4 saplings in a row means एक रो में उसने 4 saplings लगाए हैं. This 1, 2, 3 and 4. Now, in her garden, the distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Adjacent means बाजू-बाजू वाले, जो एग्जैक्ट बाजू-बाजू वाले दो saplings हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 3/4 मीटर। इधर 4 saplings है, this 1, 2, 3 and 4. This first number sapling, this second number, this third number and this one is fourth number. So ये 4 sapling में अगर आप देखते हो तो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का डिस्टेंस है 3/4 मीटर, सेकंड एंड थर्ड के बीच का डिस्टेंस है 3/4 मीटर, थर्ड एंड फोर्थ के बीच का डिस्टेंस है 3/4 मीटर. But now your question is that then find the distance between the first and last sapling. Means a first and a last, इसके बीच का हमें क्या करना है, एक टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो टोटल डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, सो 3/4 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, बट हाउ मेनी टाइम, सो दिस वन इज फर्स्ट टाइम, दिस वन इज सेकेंड टाइम एंड दिस वन इज थर्ड टाइम. अगर 3 से 4 सैपलिंग है तो उसके बीच में आपको 3/4 मीटर, 3/4 मीटर एंड 3/4 मीटर मीन्स 3 टाइम उसकी गैप आपको मिलेगी. सो 3/4 मीटर को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, सो 3 3 is 9/4 मीटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो 4 in denominator as it is, 4 का टेबल, 4 to the 8 plus 1 then 9 means 2 and 1/4 meter is our answer. So the total distance between first and last sapling is 2 and 1/4 meter. Now after that question number 6. Your question number 6 is also one of the word problem. Lipika reads a book for 1 and 3/4 hours. वो कितने टाइम के लिए, डेली आवर्स, एवरीडे. एवरीडे मीन्स पर डे, एक दिन में वो 1 and 3/4 आवर्स के लिए बुक रीड करती है डेली. शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days. ये जो बुक है वो कितने दिनों के लिए रीड करती है, तो ये बुक जो है वो फिनिश करती है 6 दिन में, 6 डेज के लिए वो फिनिश करती है. देन हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेयर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक. अभी कितने टोटल आवर्स उसको लगे होंगे. सो इधर 6 डेज है, 1 डे में अगर 1 and 3/4 आवर्स है तो 6 दिनों के लिए कितने होंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करो. तो लिपिका रीड्स द बुक इन एंटायर 6 days इज इक्वल टू, अगर 6 डेज के लिए है तो 1 डे में 1 and 3/4 आवर्स, सो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 6. सो पहले मिक्स फ्रैक्शन दिया है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट. 4 1 is 4 plus 3 7/4. Now again we have to do multiplication, numerator with numerator, denominator with denominator. Here no one number, then you can say 1. If you want to write down, then you can write it here 1, but it's nothing any meaning. So 6/1 multiplied by 7/4 means 6 multiplied by 7 divided by 1 multiplied by 4. Here 2 3 is 6 and this 2 2 is 4. Then 2 is cut. Then here 3 7 is 21 and this 2 only remaining. So now 2 का टेबल, 2 10 is 20. अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो 22 हो जाएगा. तो 2 10 is 20 plus 1 21 divided by 2. So 10 and 1/2 hours she can
finish that book in 6 days in 10 and 1/2 hours. Total time she have to require. Now question number 7. Question number 7 is also one of the that word problem. A car runs 16 km using 1 liter of petrol. Then how much distance will it cover using 2 and 3/4 liters of पेट्रोल? अभी कितना दिया है आपको? 1 लीटर अगर पेट्रोल कार यूज करती है तो उसमें वो 16 किलोमीटर डिस्टेंस कट कर सकती है. सो आपको इधर क्वेश्चन में दिया है कि अगर कार को 2 and 3/4 लीटर्स अगर पेट्रोल हम उसके डालते हैं सो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. सो 1 लीटर 16 किलोमीटर, so 2 and 3/4 liters. For that how much? This one is cross multiplication. So 2 and 3/4 multiply by this 16. So 2 and 3/4 multiply by 16. So now we have to convert this one mixed fraction to improper fraction. 4 to the 8 plus 3, 11/4 multiply by 16. Now 4 4 the 16. This 4 and 4 in numerator denominator cut. So 11 4 the 44 kilometer distance the car. So car runs 44 kilometer distance in 2 and 3/4 liters of petrol. Now after that question number 8. Question number 8 is A number. In that you have to given two questions. So question 8 it's first A is coming first. Provide the number in the box such that 2/3 multiply by box then 10/30. So 2/3 को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10/30 मिलेगा. तो 2 का टेबल बोलो तो 2 5 जा 10. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो 10 मिल गया. 3 का टेबल बोलो तो 3 10 जा 30. So your answer is 5/10. Now second number. Now simplest form. Second क्या है? The simplest form of the number obtained in the box. So box में जो आपको नंबर मिला उसका आपको क्या करना है? So simplest form obtained in box is. तो बॉक्स में जो नंबर मिला 5/10 उसका simplest form क्या मिलेगा? तो 10 means 5 to the 10. This 5 and 5 is cut. So remaining in numerator no one number remaining. So you can say 1 in denominator, 2 is remaining. Same as this one A, B number you have to solve in your homework. Here your exercise 2.3 is finished and now we have to start our exercise 2.4 in our next video. Thank you.